everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us now get at this question. So, question में क्या कह रहा है? Three identical wire rings have been placed symmetrically as shown in the figure. A, B and C are centers basically of these three rings and resistance of each ring is given that is equal to 3R. And we have to calculate equivalent resistance of this structure across C and D. So, सबसे पहले आप क्या करोगे? C and D से पास करता हुआ एक लाइन बना लो. And इस line के across you will connect a battery and you will try to see that current distribution it will be in what manner so that you can decide which one will be in series parallel sort of. Done है. But ये circuit हमें उतना simple नहीं दिख रहा. We need to go further. I mean, we just need to check that across this line, which is passing uh, along CD, I mean how this circuit is behaving. अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन के अराउंड दिस सर्किट, दिस मेश स्ट्रक्चर is getting equally divided into two parts. So we can see that along this line, this circuit is symmetrical. डन है. सो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी लिखो एंड वी कैन सी दैट अलोंग दिस डॉटेड लाइन दिस सर्किट इज सिमेट्रिकल. क्योंकि अगर आप इसको मिरर की तरह ट्रीट करते हो, यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड पार्ट का मिरर इमेज इज द राइट हैंड पार्ट. ओके, सो mirror image है कहने का मतलब क्या? Since we are dealing with the circuit, we will say that mirror image of A is B point, and so we will say that potential of point A is equal to potential of point B. क्योंकि आप सर्किट का मिरर इमेज की बात कर रहे हो, सर्किट में कौन सी चीज सेम होगी? If they are identical, then we will say in terms of potential they are identical, right? So यहाँ पे let's say this is point P and let's say this is point Q. So P and Q are identical. So you will see that potential of P is equal to potential of Q. So ये छोटे से information से we can rule out one thing, and that is no current will flow in this part and no current will flow in this part. क्योंकि P and Q का potential same है, difference is zero, no current flow. A and B के cross भी no current flow. डन है. अब आप एक काम करो, इस सर्किट से इन दोनों पार्ट को रिमूव कर दो. अगर आप इसको रिमूव करते हो, सर्किट विल लुक लाइक दिस. Again we need to reduce it further. Battery connect करना I always prefer. So I've just done this. This is point C and this is D. अब आप देखो, अभी भी this is acting as what? This is acting as mirror. Right hand, left hand part का mirror image क्या है? Right hand part, right? So now you can do one thing. Along CD this is symmetrical. So CD के around आप इसको wrap कर दो. कहने का मतलब जब आप किताब खोलते हो तो किताब को बंद करते हो, right? When you have opened the book, it is spreaded, right? When you close it, when you put one part over another, क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज लेफ्ट हैंड पार्ट को राइट हैंड पार्ट पे ओवरलैप कर दो. सो जब आप इन दोनों को मोड़ दोगे अलोंग द लाइन सीडी, सो तुम इसे खुली किताब की तरह समझ सकते हो. सो सीडी तुम्हारा किताब का बाइंडिंग वाला पोजीशन है एंड दिस इज किताब का वन एंड, दिस इज किताब का अनदर पेज. दोनों को क्लोज कर दो. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? तो चलो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ये P था, ये Q था. सो P क्या होगा? Q के पास जाकर गिरेगा. A किसके पास जाकर गिरेगा? B पर. एंड इन दैट केस दिस रेजिस्टेंस विल फॉल अपॉन दिस, this will fall upon this will fall upon this and this will fall upon this. कहने का मतलब जब आप ओवरलैप करते हो तो क्या कर रहे हो? जैसे दिस P and C will fall upon C and Q. So P and C के क्रॉस सपोज कर लो यहाँ पे एक रजिस्टर था एंड C and Q के क्रॉस भी है एंड दिस इज योर, एंड P and Q का पोटेंशियल सेम है, राइट? सो P and Q को एक पॉइंट मान सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में. सो P and Q and C लिखो यहाँ पे, Q and C like this overlap कर रहे हैं, ठीक है? So this PC part will get overlapped onto CQ part. It can, क्योंकि P and Q are same point, right? So कुछ ऐसा. So simply किताब खुला है, उसको आप बंद कर दो. So करना है हमें बंद. अब अगर हम बंद करते हैं तो ये पार्ट का रेजिस्टेंस आप R ले लो, तो इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस क्या होगा? सिमेट्री से R. क्योंकि देखो ये जो जितना लेंथ ये है, सेम लेंथ इज दिस वन. रेजिस्टेंस सेम होगा, बट अभी के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं. सो आफ्टर ओवरलैपिंग वी विल बी गेटिंग व्हाट? वी विल बी गेटिंग structure like this. Done है. So this is basically parallel combination of two registers, and that two registers is what? This one and this one. And this will be the parallel combination of in this reduced format, uh, equivalent resistance of two parallel combinations, that is your this one and this one. ठीक है?
सो कुछ ऐसा है। चलो अब रेजिस्टेंस को हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। सो लेट अस लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे बताना हो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मुझे पता है कंप्लीट रिंग का रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज योर 3R। So we need to check that this part of this ring is making how much angle at the center. If we know that angle, we can say that how much will be its resistance, right? So अगर आप इसकी एंगल की बात करो, यहाँ से ये ऐसे लेकर आओ, यहाँ से ये ऐसे लेकर आओ, दिस इज आई मीन दिस विल बी, इसको अगर आप ध्यान से देखो, एक काम करती हूँ ऐसे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ए बी एंड सी को आप कनेक्ट करके चेक करो। सो इफ यू कनेक्ट इट लाइक दिस, यू नो दैट ए बी सी आर व्हाट, दे आर बेसिकली द centers of these three rings, right? So AC is radius of one, BC of another, AB of another, and सारे identical है तो सबका radius same है, यानी कि all sides of this triangle, marked triangle is same. So this is 60 degree, done है, and this is 60, this is 60. इसका क्या simple मतलब है? इसका simple मतलब ये है कि देखो इस सेंटर पे ये वाला जो आर्क है, this is making an angle of 60 degree. Similarly, this arc is making an angle of 60 degree at this point, and this arc is making an angle of 60 degree at this point. ठीक है? Similarly, आप यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर लो, how much angle it will make. So यहाँ से this is R, right? And this is also center to the center of which C center of which ring? C center of this big ring, and this is a point on this ring, right? So this is also radius, this is also radius, so this is also 60. Done it? So you can clearly see here that this small arc, this one, this one, this one, all are making an angle of 60 degree at their respective centers. So if they are making an angle of 60 degree at their centers, what will be the resistance value? So complete के लिए 2 pi angle के लिए resistance क्या है? 3R. So 1 radian के लिए आप क्या लिखोगे? 3R by 2 pi. So 60 के लिए क्या लिखोगे? Pi by 3 से multiply कर दो. And this will become how much? This will become R by 2. So हर small portion का resistance क्या होने वाला है इन सारे parts का? तो मैं चलो यहाँ पे mark कर देती हूँ. इसका R by 2 है. This is also R by 2 and this is your R by 2. ये तो हमने हटा दिया है, तो चलो इसकी बात ना ही करें तो बेहतर है. We have removed it, right? And this is R by 2, this is R by 2. This is also R by 2, this is also R by 2, this is also R by 2. कुछ ऐसा है, right? अब आप देखो हमारे पास एक और portion बचा हुआ है, this is this one. So how much angle this portion will make at the center? ठीक है, क्योंकि देखो ये पोर्शन भी तुम्हारा कितना होने वाला है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट? सो दिस इज ऑल्सो R by 2, दिस इज ऑल्सो R by 2, सॉर्ट ऑफ, राइट? ये वाला पार्ट देखो कितना एंगल बनाएगा, सो इट विल मेक एन एंगल ऑफ, यहाँ से आप ऐसे पास कर लेना, लेट अस आई मीन इस पार्ट से हम ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ से सॉरी ये कुछ स्ट्रेट बनाने की वजह से ऐसे हो रहा है। सो यहाँ से आप ऐसे कंबाइन करो एंड ऐसे कंबाइन करो, सॉरी नॉट ऐसे, this will touch up to this point, right? How much will be this angle? So clearly this angle is how much? I mean this angle is how much? This is your 60 degree. This angle is how much? This is your 60 degree. And this angle is how much? This is your 60 degree. So 60, 60, 60. That will become how much? 180. So rest is clearly 180. So this is actually the half of this ring. Okay, this portion. So this is going to be making an angle of 180 degree at the center. So its resistance will be half of the complete ring. That is, it will be 1.5 R. ठीक है, सो चलो अब हम इसको मार्क करते हैं। जब हम इसको मार्क करेंगे तो क्या होगा, दिस R by 2 will get overlapped onto this R by 2. R by 2, R by 2 in parallel will become R by 4. Similarly, this will get overlapped onto this R by 2, R by 2 in parallel, R by 4. Similarly, this will get overlapped onto this again R by 4, right? So this is R by 4, R by 4, R by 4. Similarly, ये वाला पार्ट भी तुम्हारा क्या होने वाला है, R by 4, because this will get overlapped onto this. So reduced की अगर आप बात करो, this is R by 4 and this is your R by 4 and this is also your R by 4 and this is how much? This is also R by 4, right? This is R by 4 and this will become how much? This is going to be equal to 1.5 R and 1.5 R को आपने overlap किया है, right? So इसको अगर आप parallel में combine करोगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा हमें? So this is basically 2 by 3 R plus 2 by 3 R. So we are going to get how much? Basically
4/3r, so this will be nothing but 3r/4 because this is 1/r equivalent. डन है. सो दिस इज योर 3r/4. आई होप यू हैव गॉट दिस. ये 3r/4 कहाँ से आया? देखो ये वाला पार्ट जो है ये गिरेगा जाकर इसके ऊपर. So they will be in parallel, and this is 3r/2, 1.5r, right? And this is 3r/2. So 3r/2, 3r/2 in parallel will become 3r/4. So that is why I have written it like this. ठीक है ऐसा. अब इस सर्किट को आप सॉल्व कर लो. ये सर्किट बहुत ही इजी है. सी एंड डी पॉइंट अब आप ले लो प्लेन में. सो सी एंड डी पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक. सी एंड डी. सी एंड डी से आई मीन यहाँ पे देखो r/4 सी से निकला है. सो सी से आप दो रेजिस्टेंस निकाल लो, r/4 and this is your r/4. And then let us take 2 points E and F. So E F is this basically. यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है? I mean D से पहले आप I mean D say two registers are coming out. One is your r/4 this one and another is your this. So सबसे पहले मैंने उसको लिखना है and this is your r/4 D2 AB. D2 AB. AB portion is where? This is your C, right? A and B was I guess A and B is your this one, right? This is A and B. So A and B to D, this is r/4 basically. This is r/4. So this is your 3r/4. E to F to D is 3r/4, right? So this is the circuit. और यहाँ से एक combination है. This is your how much? r/4. आपको दिख रहा है ये व्हीटस्टोन जैसा स्ट्रक्चर है, but this is not balanced Wheatstone bridge. This is unbalanced, right? And how we solve unbalanced Wheatstone bridge? With the help of delta star conversion. So delta star conversion simple. अगर आपको कुछ ऐसा सर्किट में कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है ट्रायंगल के शेप में, let's say this is A, this is B, this is C, and let's say this is R1, this is R2, this is R3. Then we can reduce it into the form of star. I mean in this form. In this form, let's say this is equal to RB, this is equal to RA, this is equal to RC. Then RA can be written as what? RA can be written as, ये वाला पार्ट आप लिख रहे हो, इन दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 divided by sum of all the resistances. Similarly, if you have to go with calculation of RB, RB के adjacent में जो रेजिस्टेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो. So RB will become R1 R3 divided by summation of all these three. Similarly, you will calculate RC. Sorry, RC. Yeah, RC. Okay. So यहाँ पे मैं इस सर्किट को ऐसे ही रिड्यूस करूंगी. So I'm going to do this. यहाँ पे इसको ऐसे रिड्यूस करूंगी. ठीक है, कुछ ऐसे. अब देखो ये वाला कितना होगा. सो यहाँ पे इस ट्राइंगल का ये जो स्टार मैं ले रही हूँ r/4 r/4 r/4, तीनों ही रेजिस्टेंस r1 r2 r3 सेम है, राइट? सो कैलकुलेशन काफी इजी होने वाला है यहाँ पे. So if you want to write the value of this part, you will be doing r/4 into r/4 divided by sum of three resistances. So that will become 3r/4. So this will be equal to how much? r/12. So this is going to be r/12. This is r/12. This is r/12. अब आप एक काम करो, आपने रिड्यूस कर दिया है तो स्टार डेल्टा को हटा दो. सो यहाँ से मैंने इसको हटाया और उसकी जगह मैंने उसे स्टार में कन्वर्ट कर दिया है. सो इट इज दिस. ठीक है, दिस इज r/12, दिस इज r/12, दिस इज योर r/12. ठीक है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस सर्किट और ये सर्किट बहुत इजी दिख रहा है. r/12 एंड 3r/4 आर इन सीरीज. r/12 एंड दिस इज r/4 इन series and then they are in parallel and then all this parallel is in series with r/12. So easily हम निकाल सकते हैं. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. So अगर मैं r/12 और 3r/4 को ऐड करूं तो कितना होगा? r/12 plus 3r/4. So इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. This will become how much? 10r/12. So this is equal to 5r/6. So this whole is equal to 5r/6. Now this will become how much? So this is r/12 plus r/4. So again r/12, 3r/12, right? So this is 4r/12, that is r/3. Done है. So this is r/3, this is 5r/6. चलो अब इसे रिड्यूस करके मैं फाइनली लिखती हूँ. So this is C point से resistance coming out is r/12 and then we have got two part. One is this, another is this. They are in parallel, right? And then there is this D. So this is your 5r/6, right? That was how much? 5r/6, yes. And another is how much? This is your r/3. Now you simply need to add this in parallel, then in series with r/12. You do this, you will be getting the answer. So इन दोनों को पहले आप parallel में add कर लो. So 1/r equivalent is 6/5r plus
3/r. ठीक है. So this will be equal to how much? इसको 5 लिख लो. This is 5. So this is equal to 21/5r. So r equivalent is equal to 5r by 21. So this is basically nothing but r by 12 and in series with 5r by 21. And this is your C, this is your D. Now you simply add this two in series. So R equivalent is nothing but R by 12 plus 5R by 21. ठीक है. इसको आप add करो and what value you will be getting, you can clearly write here. Uh, I mean this will be how much? So clearly you can write here. Let us do this. अगर आप यहाँ पे I mean if you consider the LCM, then it will become how much? It will be 7 into 3 into 4. So basically this will become how much? 7R plus, and this is your uh, 20 20R, right? So this is 27R divided by 21 into sort of 7 into 3 into 4, right? So 7 into 3 into 4. So this 9 times it will go, and then this is 9R by 28. So this is going to be the answer. But in the SBT book, actually there is one mistake. Answer given is different. And mistake वहाँ पे ये है कि जैसे देखो यहाँ पे हमने मार्क किया ना 3R by 4. तुम्हारे सोल्यूशन में यहाँ पे दिया हुआ है 3R, and that is why that is the mistake. So this was the doubt of one of you actually, and so I want to mark it. Solution में here it is 3R, but this will be actually 3R by 4. So I hope you have understood this question. इस question में तुम्हें देखो करना कुछ भी नहीं था. Simple part ये है कि सबसे पहले तुम्हें हर point का, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाल लो. वो आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो. इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा. सो दीज आर बेसिकली सेमी सर्कल्स. डन है. सो इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, दिस इज 3R/2 एंड दिस स्मॉल स्मॉल पार्ट हैव रेजिस्टेंस ऑफ R/2. उसके बाद दिस वाज सिमेट्रिकल अराउंड दिस लाइन. इस खुली किताब को आप बंद कर दो. बंद करने का मतलब वॉट एवर पार्ट इज फॉलोइंग ऑन टू अनदर, दे आर इन पैरेलल. सो दिस इज फॉलोइंग ऑन टू दिस. सो 3R/2 3R/2 इन पैरेलल. किताब बंद करोगे तो इसका रेजिस्टेंस आप लिखोगे 3R/4. और सिमेट्री जब आप चेक करते हो ना, ऑल्सो चेक फॉर पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल. तो यहाँ पे ए एंड बी सेम पोटेंशियल पे था, इसको हमने हटा दिया, एंड दिस वाज एट सेम पोटेंशियल, इस यहाँ से इसको हटा दिया, राइट. सो रीड्रॉ किया सर्किट को और उसे फाइनली हमने स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज किया है. आप केवीएल भी कर सकते हो, केवीएल केसीएल, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, इसलिए आई जस्ट गो विद दिस वन. You can go with this one also because this is not something extra or complicated, you can do, right? So I hope you have understood, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.